Yeah, Felix. Felix, can you hear me? Hello. Yeah, Felix, can you hear me? No. See, I'm trying to connect through. Vishal asked, okay, he will join later, so we can start. Yeah. Yeah. Okay. All right. Thank you everybody for joining for this session. This is being live streamed in YouTube, University's official YouTube channel. I can see that the several participants already streaming, accessing this particular special lecture. This is a Science Week plus our Foundation Day special lecture by our renowned invited speaker, Professor J. Gowrishankar. He is the director of IISER Mohali. And also, of course, he has several accolades. Before introducing the speaker, as the universities, most of the programs we have, we will start with the official anthem. We have a national anthem, university anthem. So let us start with the university anthem. Sorry, there is some issues with. Yes. So yes, please stand for the anthem. So we'll just begin. पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, संस्कृतियों का मिलन बिंदु, विज्ञान दृष्टि धारण करके विद्या की इस फुलवारी से महके देश का प्रांगण सारा, ज्ञान विज्ञान का मधुर संगम, जीवन मूल्यों का सहारा, ये नवाचार का पाठ पढ़ाता, देश विदेश की समझ बढ़ाता, भावी पीढ़ी का ये निर्माता, विश्व बंधुत्व का भाव सिखाता। तेरी शान रहे, तेरा मान रहे, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय। Thank you, everybody. Professor J. Gowrishankar is the director of the IISER Mohali. Let me just give a brief introduction about our honorable speaker. He is a medical graduate from Christian Medical College in Vellore, and Professor J. Gowrishankar had opted for a career and research and obtained his PhD in microbial genetics in 1983 from University of Melbourne in Australia. He was scientist and group leader at CCMB, a very famous institute of CSIR at Hyderabad from 83 to 2000. And when he invited to join the faculty of the CDFD, another very famous prestigious institute, Center for DNA Fingerprinting and Diagnosis in Hyderabad, as a director, he served as a director from 2006 to 2015. And since December 2019, he is the director of the IISER Mohali, Indian Institute of Science, Education and Research, another prestigious institute. So the broad theme of Dr. Gowrishankar's research has been the use of genetics and molecular approaches to understand various physiological processes in bacteria, including osmoregulation, solute transport, RNA processing and turnover, maintenance of genome integrity, and the interplay between transcription, translation, and DNA replication. He is an elected fellow of Indian National Science Academy, that is INSA, New Delhi, Indian Academy of Sciences in Bangalore, and national, he is a recipient, of course, he is a recipient of the Young Scientist Awards of both INSA and CSIR. He also won prestigious BM Birla Prize and, Indian Nobel Prize, Shanti Swarup Bhatnagar Prize as well, and also FIXI Award and the CSIR Technology Prize, New Millennium Medal of Indian Science Congress, and Sri Om Prakash Bhasin Award, J.C. Bose National Fellowship, another very prestigious national fellowship of the INSA, and Mose Leo Schaester Award of the American Society of Microbiology, and the INSA Senior Scientist Award. In 2013, Dr. Gowrishankar was conferred the Padma Shri Award by the government of India.
So we are really happy to have you with us, sir. And Professor Gowrishankar is going to talk on the title, A Role for Redundancy in Securing the Integrity of Genetic Information. Over to you, sir. Really humbled to have you with us. Thank you, Professor Felix. And I hope I'm audible. Yes, sir. I'm delighted to be a part of these celebrations of both the Foundation Day or the Foundation anniversary of the Central University of Punjab, as well as the week which is progressing to the National Science Day. So as it's being referred to as the Science Week. And I take this opportunity to wish this new institution, it is even younger than Isa Mohalli, which is itself very young, all the best in the years ahead with its extremely talented faculty and students who are very bright. I think the future is indeed something to look forward to, not only from the point of view of your own institution, but for its contributions to the state of Punjab and to the country as a whole. What I was going to take the audience through today is what I call a small lecture on the role of redundancy for keeping our genetic information safe and secure. I have kept the kind of slides and the talk at a level which is pitched for both students from high school, for people from other disciplines of science or the humanities, in the hope that that this would be something that becomes a foundational information of something which is very important for human life. Towards the end of the talk, of course, I will go into a little more complex subject for the people who may be from the life sciences itself, who are hearing the talk. So with that, I can move on. I'll have to share the screen. Please tell me whether you can see it now. Professor Felix, is that visible now for everyone? Yes, sir, it is visible. Okay. So, yeah. So what you see, of course, here is the iconic picture of the double helical structure of DNA, which has next to Charles Darwin, which I will refer to in the couple of slides from now, has been the major contributor to our understanding of mechanisms of life as we know it today. Yeah. So I begin with what a very simple primer on the nature of the genetic information. Of course, many of you would be familiar with this. So the information for the genetic nature is encoded in nucleic acid polymers, and most commonly the molecule called DNA. And the code itself is a sequence that is repeats of 4 bases, as they are called, A, C, G, and T, which can be permuted in all possible ways and arranged in the chain of polymer, which can be millions and even billions of bases long. So this code of, as is shown in the picture, is really what constitutes the code of life. And the DNA molecule itself has a pair of such polymer chains, and that is shown in the picture as strand 1 and strand 2.
And colloquially, they are sometimes referred to as the Watson strand and the Crick strand, in honor of the two people who were instrumental in discovering the structure of the DNA double helix, explaining the importance of the double helical structure in terms of the information that it encodes for life and the way in which it can be transmitted from parent to offspring. So Watson and Crick discovered the structure of DNA in 1953 and were awarded the Nobel Prize about 10 years later. So the important part of the double helical structure and the presence of two polymer chains with these bases A, T, C, and G is that the sequences of the two chains are related to one another by what are called the AT and CG rules. So what this means is that wherever there is A on one chain, it will obligatorily have T on the other, and where there is a C on one chain, there is a G on the other. So you can see that the two chains that are shown in this picture completely fulfill the AT and CG rules for every pair of bases that you can see in the figure. So they are called base pairs. The instructions for converting one duplex DNA molecule to two daughter molecules that can be passed on to the offspring, either cells or organisms, is itself encoded in the DNA genetic code. And the way to make the copies of the code are also encoded in the DNA sequence. And this process by which it is faithfully maintained and transmitted is critical for what we see as life today. But and that is what we call as the fidelity. But there is a small amount of infidelity, which is called the mutation rate. And that is also very important for the process that we refer to as biological evolution. So now I come to the connection of the talk today with Charles Darwin and his concepts. And what I mentioned in the previous slide is that the storage and copying of DNA sequences is very faithful. In other words, there is a very high fidelity in it. And this fidelity has developed through a process of evolution. So that is what we refer to as Darwinian evolution by natural selection from populations of individuals with random variations. And this is shown in the picture that I have on the slide. So on the left are a set of molecules that, or set of we can even say organisms, which are different from one another and have arisen as random variants from a single, let us say, ancestral cell. Then natural selection will be imposed on this random variants in the population. And if we refer to these different colors as indicative of the fidelity of DNA copying, so the yellow represents copying with low fidelity, that means with high mutation rate, and the dark red is high fidelity and low mutation rate, then natural selection will convert this random variants in the population or the population of random variants to a more homogeneous collection represented only by the orange and the dark red. In other words, there is a natural selection for high fidelity of the storage and copying of DNA sequence. I can draw the analogy here to other aspects of information and the way they are stored or copied. And we can think of information in books and information in computers. And in both cases, fidelity is important. And especially in the computer, we know that a fairly large amount of
effort has gone into high fidelity of storage and copying of data present in the computers. With electronic information storage, zero error is the ideal, right? So that means we want no, absolutely no possibility of an error occurring during the copying and storage of electronic information on the computer. However, in biology, genetic information, with that 100% fidelity is not so beneficial, because what it then does is it eliminates the generation of variants itself upon which natural selection can then act. So what has been selected in evolution is very high but not perfect fidelity. So this is important to keep in mind. And this is what is referred to in a jargon phrase as the evolution of evolvability. And what gives rise to that infidelity, as I mentioned in the previous slide, is the mutation rate. And this is approximately constant. And as you can see, it is pretty low, because in that sequence which I spoke about, one base gets altered every generation for 300 effective genomes or 300 human individuals. So we are at a very, very low rate of mutations, but it is a non-zero rate. So we have talked about a DNA molecule, the fact that it has two polymer chains that of bases A, C, G, and T that are, and the two molecules are related to one another by the AT and the CG rules. So now we can ask, how is the copy of a DNA molecule made? And this copying or replication is achieved by a motor called the replisome, which is shown in this figure as just an oval that is moving from left to right. So it's a motor. And the blue pair is the parental DNA duplex, or the pair of chains that I spoke about. And these chains separate to allow two new chains to form, which are strands 3 and 4 shown in red. And for this separation, there is another molecule that is required, a function, which is called a helicase, which unwinds or unzips the parental or the template strands. And then a pair of polymerases, which are part of the replisome, then creates new polymers that are the strands 3 and 4, again following the AT and CG rules. Consequently, strand 1 and 3 are, or put it this way, strand 3 is identical to strand 2, and strand 4 is identical to strand 1. So strands 1 and 3 and strands 2 and 4 are both duplexes, which are called sisters, and they are in turn identical to strands 1 and 2 themselves. So in this way, one molecule of DNA with two polymer chains gives rise to two DNA molecules, each with a pair of polymer chains that are identical to the first parent. So this is how the copying of the DNA molecule occurs and how fidelity is maintained. So we can then ask, how can that fidelity be corrupted? How can genetic information be corrupted? And this can occur by replisome errors during copying. So the rules are there. A should be next to or opposite T and C opposite G. But sometimes the rules are not followed because of an error. And that error will cause a corruption of the genetic information. The other way in which it can happen is for chemical or physical damage to the DNA chains and its bases. And this could occur through reactive oxygen species, through chemicals which are often called carcinogens, or through radiation that could be ultraviolet or X-rays or gamma rays. So given the importance of fidelity and given the possibility of corruption of genetic information, one can ask, how can we safeguard against such corruption? And what has been selected in Darwinian evolution is
this concept of redundancy. What redundancy refers to is that there are more than one way of maintaining the security of that information, so that even if one of the ways is in some way disabled, another way can compensate for it. So that is what we call as redundancy. So the redundancy for genetic information, and the point that I'm making about redundancy is not only for genetic information, it is, as I said, for all information. So if we can have multiple copies of the same book or multiple copies of a computer code, then the likelihood of safeguarding that information, despite one copy getting corrupted, becomes very high. And this is what redundancy achieves. So in the case of genetic information, this information can be stored in multiple copies, so that if one copy gets corrupted, we can still retrieve the authentic information from another. And the second way is that for a given copy, we can have multiple ways of detecting and repairing the corrupting event. So let us look at this in terms of the DNA molecule and the ATCG code. So the first level of redundancy in each DNA molecule is that the two strands themselves represent a redundancy. Given one strand and given the AT and CG rules, I can predict what the sequence of the second chain or the second strand will be. Right? So that's a very simple prediction. So that represents a level of redundancy within the organism. So if there is corruption of information on one of the strands, for example, by damage to a base, the information present on the second strand opposite that corrupted base can itself be exploited to regenerate or repair the corruption. And this is what I refer to in this text as DNA gymnastics, because you will see here in the pictures how this gymnastics takes place. So what I'm showing here in this figure on top are a replicating molecule of DNA. And you can see here that the strands in black represent the parental or the template DNA molecule, and the strand in red and blue represent the newly synthesized DNA strands or polymers based on the rules of AT and CG. Now, what happens in this figure is, if you can see the small triangle on the top strand, that represents a lesion or a corruption of the information on one of the strands. And that therefore leads to an interruption of the polymerization process, and the information cannot be correctly copied because it is corrupted. But now what happens is, because of the ATCG and base pairing rules, we can get this kind of gymnastics. So the topmost strand can actually form base pairs with the bottommost strand, and the blue strand gets shifted up. And the blue strand can now act as the template for the red strand to copy itself. And consequently, we now have, as you see in the last panel of this figure, both have become completely copied. So this is a way in which redundancy can operate along with some gymnastics that is encoded in the DNA to take care of corruption of genetic information because of the redundancy of the two strands of information. Now, the next figure I show is even more complicated gymnastics. I won't take you through it, but suffice it to say that all of them are dependent on this ATCG rules and the fact that because there are two polymer chains, each of them is redundant in terms of its information content to the second chain. So you can have things like template switching, fork regression, and gap repair. So gap repair is what I have shown on the left-hand side panel, but all these are ways in which
corrupted information on one polymer chain or strand can be overcome by the information present on the second polymer chain. I mentioned that in DNA is most often the genetic material, but there is another nucleic acid polymer very similar to DNA called RNA. And RNA, unlike DNA, is not a two-stranded molecule. It is also a polymer chain of ACG, not T, but equivalent called U. So it's ACGU, but it is only a single chain. However, it is, so because it is single chain, this redundancy of corruption and repair of corruption does not exist for RNA as it exists for DNA. And there are many viruses which include HIV and the COVID-19 novel coronavirus. They are all having single-stranded RNA as their genetic material. And because it is single-stranded, they have relatively high infidelity or mutation rates, which cannot be repaired because of the absence of the second strand redundancy. Now we come to a second level of redundancy in genetic information storage. The first level, which I told you, is that the two chains themselves are redundant to one another. What we are now talking about is if there is a corruption of genetic information that affects both the strands of a DNA molecule. And one such example of corruption is called a double strand break. And that is shown within the green oval here. So the strands, the two polymer strands are broken at exactly the same position on their chains. And as a consequence, one strand cannot serve to repair the other. In this case, redundancy comes from the presence of additional copies of two-stranded DNA molecules. So the organisms can carry more than one copy of their DNA molecules. For example, in humans, we have two copies of every chromosome, and this can provide an additional level of redundancy, which is very important when what is called as two-strand damage occurs, which can occur with gamma rays or X-rays. And the repair process, which is now templated by the second duplex, in this figure, it is shown by the red ladder, as you can see it, where the rungs of the ladder are the base pairs between AT and CG. I will not take you through this, but this can provide the redundancy to make, again, two copies of intact duplex molecules. But you can see here that some of the red has moved into the blue and vice versa. So this process is called homologous recombination. Okay, so what we have so far talked about is safeguarding information by the redundancy within the DNA molecule themselves, either the two strands being redundant to one another or having two copies of a DNA molecule. But there is a second mechanism by which information can be safeguarded. And this is in terms of detecting or repairing a corruption in the DNA molecule. And this is what we can go through in the next part of the talk. So what we are talking about here is that an error has occurred during DNA replication. And how can that error be? So that represents a corruption. How can that be detected and corrected? And one pathway by which this happens is called proofreading. And you may be familiar, or you may have done proofreading of your own PDF or Word documents. And this is similar to this. So what we are talking about is, in this figure, the green chain represents the template DNA on which a new chain in yellow is being made by the polymerase molecule. And as you can see, the bases on the yellow molecule are being put together following the AT and the CG rules, until we come to a point
where the polymerase has made an error. So instead of putting a G across the C, the polymerase has in error incorporated an A. So this is the addition of an incorrect base. What proofreading does is that within the polymerase itself, there is a component which is scanning each newly incorporated base to ask whether it has followed the AT and CG rule. And in this case, when it detects that it has not followed the rule, the proofreading component removes the incorrect base that has been put in. So in this case, it removes the A and gives the polymerase another chance to put the base across the C, right? So this is how the proofreader operates. What we know is that the error rate of the polymerase is of the order of 1 in 1,000 bases by itself. But with the proofreading, it becomes very much lower for the simple reason that when this base is removed, the likelihood that again an error will be made here is only 1 in 1,000. So that is the way in which the fidelity is maintained during DNA replication by the proofreading capability of the polymerase. Now there is a second pathway, and this is where redundancy comes in. So this pathway is called mismatch repair. So what happens here is that we assume that the proofreading has failed. So the proofreading is an important component of fidelity, but we assume that it has failed. In which case, what happens is the event or the result that is shown in the cartoon here, that there is a base in the blue strand which is not matching with the base on the red strand. It is a mismatch, but it has not been corrected during the proofreading process. So it has become part of the two polymer chains, strand 1 and strand 3. And this is a mismatch, right? Now what happens is that there is another process called mismatch repair. It operates soon after replication. So this replication, as I told you, the replisome is moving from left to right. This part of the blue molecule has only now got replicated, and mismatch repair detects this mismatch and corrects it by using a set of proteins that are called the mute S, mute L, and the mute H proteins. The question arises, how do these proteins know which of these two bases needs to be corrected? Remember that strand 1 is the parent or the template. We assume that it is the correct base. Strand 3 is the newly synthesized base, newly synthesized strand, and therefore this is the incorrect base. How does the mismatch repair system know that it is the red base that needs to be replaced? And the answer is that there are, and this is again, one of the beauties of the Darwinian evolution process by which this mechanism has been selected in evolution. There are sequences which are represented as GATC in the DNA. And the feature of GATC, as is marked here, where I have marked it on the blue strands, is that on the opposite strand is also GATC read in the opposite direction. This is the GC and the AT pairing rules. Therefore, we call these as palindromic sequences. So when strand 1 has a GATC, strand 3 will also have a GATC going in the opposite direction, as is shown here. There is a methylase, there is an enzyme called a methylase, which recognizes a GATC base pair and methylates the A bases
on them. So you can see here, which in the parental DNA molecule, both A residues are methylated. And that is shown by the what is called the umlaut on top of the A base, right? During replication, the parental strand is methylated. The newly synthesized strand is transiently unmethylated because it takes a few seconds for the methylase enzyme to identify this GATC sequence and methylate it. Within those 3 or 4 seconds, the mute HLS system identifies the absence of methylation on this A and therefore recognizes the red strand as the strand to be corrected before the methylase acts. So this is, as you can see, a very, very elegant solution to what would otherwise be a major problem. Because if the correction were to have occurred on the blue strand, where, so let us say this base on the blue strand, the mismatch is replaced by the so-called correct base that base pairs with the red base, it will create a mutation, right? Because now it is present on both strands. So this is how an error during replication is corrected by the mismatch repair system so that it does not become a mutation. And the discovery of this mismatch repair system has been so important in biology that it was awarded the Nobel Prize in 2015 to its discoverer, Paul Modrich. Okay, so now we have these 2 pathways for repairing errors. Sorry, so before that, suppose there is a mismatch error which escapes even the one in replication, then it becomes fixed as a mutation. And once it is so fixed, it becomes the new normal because that will now be protected in future by the same high fidelity mechanisms. So just to now put this in a quantitative sense, if there is only a proofreader and no mismatch repair, and this, what this quantitative understanding tells us is the power of the redundancy. So if there is only the proofreader and no mismatch repair, the mutation rate is of the order of 1 per million. Cells which have only a proofreader and no mismatch repair, they are viable, but in a Darwinian competition context, they will lose out to a cell which has a higher fidelity because it has both proofreader and a mismatch repair system. Now, if a cell has only mismatch repair and no proofreader, again, it has a mutation rate of 1 in a million. Again, it is viable, but only without competition. When both are there, then we have a mutation rate of 1 in 10 billion, 10 to the power minus 10. This is competitively viable, right? Nothing can beat it in terms of the fidelity of copying. If we have a cell which has neither the proofreader nor the mismatch repair, the mutation rate now becomes 1 in 1,000. And this is so high that the cell becomes inviable. And the jargon that we are using is synthetic lethal. In other words, the absence of any one mechanism is by itself not lethal, it is viable, but the combination of the absence of 2 mechanisms is synthetic lethal, right? So what I've talked about so far is bacterial system, which has mismatch repair and the GATC. Humans too have the same kind of redundancy for error correction during replication of proofreading and mismatch repair. However, they do not use the methylase that I've spoken about that is present in bacteria. So the fact that the error correction pathways of proofreading and mismatch repair are commonly seen both in humans and in bacteria
will very strongly indicate that the common ancestor of bacteria and humans very, very early in evolution already had these systems in their cells. We are talking of cells which were present on Earth more than 2 billion years ago. And I talked about two systems for redundancy as examples, but we have so many other redundant systems for damage, DNA damage protection. We have oxidative damage, alkylation damage, nucleotide excision repair, base excision repair, and double strand break repair. So you can now get a feeling for how important it is to maintain the fidelity of the DNA sequence during the copying process that evolution has selected for so many redundant mechanisms to retain this fidelity. So what is its relevance to cancer, right? Cancer is also Darwinian evolution, which is playing out within a single organism. Unlike Darwinian evolution on Earth, where different organisms are competing with one another for, during the process of natural selection, here cells within a single individual are competing with one another for proliferation, right? And if a cell were to arise that has a competitive advantage over its neighbors, it will begin to proliferate and give rise to cancer. And that is exactly what can be selected in a same parallel to Darwinian evolution. And chemotherapy is aimed at killing the rapidly dividing cancer cells, right? So one feature that distinguishes cancer cells from normal cells is that the cancer cells are dividing very rapidly. So if we can target chemotherapy to DNA replication, we are very likely to kill the cancer cells, but the chemotherapy will also kill normal cells in our body that are also rapidly dividing. And these are, for example, our blood cells, cells of our intestine, cells of our hair follicles, which is why there are serious side effects for patients who are being treated with chemotherapy for cancer. In cancer, loss of replication fidelity is an important feature for the evolution of cancer. As I told you, evolution is completely dependent on the generation of random variants. And the random variants can be generated only if replication is not 100% faithful. And in cancer, reducing the fidelity of replication provides the cancer with a growth advantage by the fact that it generates far more variants from which even faster growing cells can be selected so that the cancer becomes more aggressive. So, and this it does by disabling the DNA repair system. So the cancer cells often have mutations in DNA repair systems, such as in mutel or mutes. And interestingly, this very feature that makes cancer aggressive is being targeted for treatment of the cancer itself. And this is by exploiting what I earlier spoke about, synthetic lethality. In other words, when there is redundancy and we remove both components of a redundant mechanism, then we can give rise to synthetic lethality. And I'll try to explain this in the context of cancer. So if we have a cancer in which the DNA repair system has been disabled by mutation, we can treat with an agent that targets a second redundant DNA repair system. Now, because two systems have been disabled, as I told you, when proofreading and mismatch repair were disabled, we obtained synthetic lethality. In the same way, if we were to disable the second system, the cancer cell will die. But the normal cell will not die because only one system has been disabled by the treatment.
and the other system is still functional. And this is shown in a real example. So if you see this figure, so we can start with the text here. So there are proteins which you may have heard of. They're called the BRCA1 and BRCA2 proteins. These proteins are implicated in cancer in the context that the normal function of these proteins is to protect the genome from DNA damage, right? And if these proteins are mutated, then the DNA damage is not repaired and the cancer cells have an advantage. So many cancer cells actually have mutations in the BRCA1 or BRCA2 proteins. So, and that gives rise to a defect in homologous recombination, which I spoke about. Now, a redundant mechanism for DNA repair is mediated by something which is called the PARP or the PARP protein complex. And so we can, if we use a chemotherapy that inhibits PARP, what will happen is for a normal cell, because BRCA1 and BRCA2 are still intact, they can repair the DNA damage even though PARP is not there, and the cell will survive. But if PARP is prevented from acting because of a cancer medicine and the cancer cell has a mutation in BRCA, then the cell will die. And this is what we call as synthetic lethality. Therefore, PARP inhibitors can be used to treat BRCA1, BRCA2 negative breast and ovarian cancers because of this synthetic lethality. So in the last two slides, I thought I'll mention another important application of synthetic lethality. This is more in the term of basic research. We can use it as a genetic approach to understand biological functions. What is the genetic approach? It is that if I have a mutant and I can understand its phenotype, that tells me what is the function of the wild type gene. Because from the phenotype, I can make an inference what it is that the wild type gene is performing in the parent, right? And when two mutations are individually viable but lethal when combined, as I told you earlier, that is synthetic lethality. And that is shown in this figure. So there are two redundant functions, P and Q, and that is healthy. If one of them is lost, it is still healthy. But if both P and Q are lost, we get a lethal phenotype. This is what we explained earlier in terms of the proofreading enzyme and mismatch repair. But we can use this in other genetic studies as well. And we can make an inference if we identify synthetic lethality. It says that Q and P are performing a redundant function by the pair of genes, or that loss of one gene's function is perturbing the physiology so that the other, which is otherwise dispensable, becomes essential. And just one slide to say that in my own group, we have used such synthetic lethal discoveries, which are shown on the left-hand side as synthetic lethal pairs in E. coli, to make fairly important insights into new functions or new discoveries, as it were. I won't take you through it, except to say, for example, that what we found in our work was that the loss of a DNA helicase called UVRD is synthetically lethal with the loss of a protease called LON. And after studying this in detail, we came up with the insight that there is a role for the UVRD DNA helicase in DNA replication. Similarly, that a mutation of an RNase E removing HC terminal half and another gene called RPPH led us to conclude that the very important enzyme called RNase E actually acts
through two different pathways or mechanisms, and so on. So a third one is that transcription termination mutations are lethal when a plasmid called PAC-YC184 is introduced. And this led us to say that RNA-DNA hybrids can occur in bacterial cells, which can be toxic, and therefore it is very, very important to prevent their occurrence. And so too, finally, that transcription termination mutation was lethal with a holiday junction mutation. And this came up with a very unexpected finding, which we have just published last week, that translation initiation factor IF2 is involved in DNA recombination and repair. So I'll end with this slide, that the take-home messages from what I've tried to convey today is that the double-stranded structure of DNA itself represents the first level of redundancy for maintaining genetic integrity. Proofreading and mismatch repair are what I would refer to as a very interesting example to teach students a prototype of redundant error correction mechanisms during DNA replication. There are, of course, other mechanisms for detection and repair of DNA damage. The partial loss of genetic integrity is what underpins cancer. So the fundamental basis of cancer is the loss of genetic integrity. Redundancy underpins synthetic lethality. So if I have a redundant pair of functions, then the loss of both can be identified as synthetic lethality. And this synthetic lethality can underpin cancer treatment. It can also allow us to elucidate biological functions through a genetic approach. And finally, Darwin underpins all of what we have talked about today. So with that, I'll end my talk and thank everyone for their patience in listening so far. Thank you. Thank you so much, sir. You may please exit the show now. Yes, Professor J. Gowrishankar has did a wonderful talk, and this is our fourth lecture series of this Foundation Day week, and this is also part of our Vigyan Sarvatra Pujyate. Padma Shri Professor J. Gowrishankar, he started his talk on the importance of the errors, of course, and of course he said about lots of interesting analogies, including the software, that corruption in the software and how this DNA replication errors can be, like an analogy with that as well. And also so many interesting things which I also didn't know that. For example, the 5' to 3' strand is called Watson strand. The other one is called Crick strand. And DNA gymnastics, that is another thing. So throughout your talk, sir, I was thinking about how resilient and robust our DNA is, the way that nature has designed it, such a robustness, fantastic. And finally, you ended with how we can exploit it for gene therapy for the cancer, for example, and also how it is useful for the basic biology. Fantastic talk, sir. And now that I would like to invite our Honorable Vice Chancellor, Professor Raghavendra P. Tiwari, sir, to give a presidential remark for this session. Over to you, sir. Okay, you could ask him to unmute. Could you please? Good afternoon, Professor Gowrishankar ji. In fact, after your talk, I am unable to unmute this. We can hear you. We can hear you. Now it's fine. Yeah. So, good afternoon, Professor Gowrishankar ji. Hello. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Yes. Yeah. Yes. I joined in the beginning, and I listened the first part of your speech. That was really wonderful. In fact, after your speech, there is no need of a presidential address. Here, in the university system, we have very rigid protocol that after every talk there will be presidential address. Presidential address is actually on when there is some
2-3 days program, and there are several speakers, and then there are several themes on which, but this this foundation day lecture, in fact, it is foundation lecture series where we have invited distinguished academicians of the country to from various backgrounds. As we know that we are a traditional university, we have almost all branches of science. Then we have social science, humanities, languages. So we have speakers from varying fields of academics, and we request distinguished academicians to deliver a lecture on the current topic in science, social science, humanities, languages. And I'm thankful to you for agreeing to a bit very short notice to and deliver a lecture and inspire our teachers and research scholars. It was a wonderful talk. Basically, I do paleobiology, and for me it was very interesting. Physical, I was there initial few minutes, and then I was not there, but I was mentally there, and my ears were towards you. So it was really, for me particularly, it was a recapitulation of what I learned as a student about the biological evolution, and then I taught it as a subject in my discipline, and I have got several new clues as to how to advance, because what happens in fossil records is that several features, whether the mega features or micro features, and even the the DNA and other things are lost in the fossil record. There are few instances only where we get even the DNA preserved in the rocks, and we call those as a chemical fossils. And the identification of chemical fossils is not easy all the time, particularly for the want of sophistication instrumentation, number one. And number two, the preservation, the status of preservation is really very poor, because these are very delicate particles, and their preservation can happen only when there is ideal state of preservation, ideal conditions of preservation prevail. There only these can happen. But I have some samples, and that I got in 2012 itself, and I was planning. But in 2015 I was roped in this type of work. So since then I'm busy here. I don't know whether I'll ever get chance to study those and work out the DNA sequence in my fossils. That is basically the complete skeleton of fishes preserved in the rock, complete skeleton right from head to tail. So the description of these fish species was done, and it was published in a Russian journal long ago. It was in 2013 itself, 13 was got published. But I could not do, because that if I'm able to do that, then we can maybe that can be. And then there are other sites as well in India where we get complete skeletons of fossil preserved, and that's all. It is very beautiful sequence in the sense that the rocks in which I got these chemical fossils, they are around 22 to 23 million years old. Then other fossil records of fishes, complete skeleton I'm talking about, are from the rocks which are as old as 235 years. And then we also have a skeleton from rocks which are around 60 million years old. So if this is done, then we can establish the complete evolutionary history of fishes from from DNA point of view. So that would be wonderful study. And I'm sure that my colleagues here and the research scholars, they have also got some new idea from your talk, and like I did, because of this corona pandemic, we this year also we opted for lecture in online mode.
but we would like to have you, Dr. on some occasion here in the campus, so that our teachers and the students, just particularly the MSc students and research scholars, they get opportunity to interact with you, and they get inspired and they get new ideas in terms of not only in terms of the doctoral thesis, but also in terms of MSc dissertations. One of the problems that the education system of India is facing is that we do very less experiential learning. It is mostly theoretical, and therefore the concepts which are that the students imbibe through theoretical lectures and all, they do not remain for long in the memory span of the students. If they actually do, and likewise, when scientists like you are physically present and when the teachers directly interact with you, then the impact would be much more as compared to online learning. But this is because of this, we have to adjust for this corona thing. Now things are subsiding, so we'd like to have you once. And also, Dr. Another model that is the Ministry of Education is now emphasizing on is that the cluster of education institutions for imparting multidisciplinary education and dual degree, joint degree programs, dual degree programs. So this I have been thinking. Now, of course, maybe I get time in April to come to have joint session of all the heads of higher education institutions in Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, and where we work out a strategy as to how to enter into MOU for offering joint degree, the best talent of your institute and whatever expertise we have. If we can join hand together, not only in terms of man expertise as manpower, but also the physical facilities and the and instrumentation facility that we have. If these can be exchanged by the youth, by each other, and then it is when we talk about joint degree, dual degree program, these are not the traditional programs. They are high-end programs which are skill-based and through which we can train students to either start doing themselves, they start doing themselves something for earning their livelihood and solving the issues of this society through investigations, through innovations, and so these would be high-end programs. So maybe in April, I'm planning to have a meeting with all the heads of the institutions where we can chalk out some roadmap for achieving this very important. So I'm again thankful to you for sparing your valuable time and delivering a wonderful lecture. So that's what I wanted to say. Thank you, Dr. Saab, and I'd like to thank Professor Felix and Professor Sanjeev Kumar for taking all the trouble of organizing this very good lecture. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you so much, sir. And I would like to say I would like to invite Professor Sanjeev for the vote of thanks. Just a brief. We have a second talk also now coming up. Over to you, sir. Thank you, Felix. First of all, I would like to thank our leader, our driving force and motivation behind this Foundation Day lecture series, our Honorable Vice Chancellor, Professor Raghvendra P. Tiwari, for sparing his valuable time and listening and giving his brief remarks. And my due thanks are to our Honorable Speaker, Professor J. Gowrishankar, Director of ISM Mohali, for such a wonderful talk. So you mentioned that this is for high school students, but teachers like us who do not have that much of a genetics background, we are also benefited with your talk, sir. It was outstanding, it's awesome, and Felix has already explained so many aspects. I don't have much to say. Only please accept our sincere thanks, and we would like to have you once again for further repair mechanism, if you could speak on someday. And
I would like to thank all the audiences who joined this lecture series, along with my colleagues who are sitting in this hall. Thank you all. Thank you very much. Jai Hind. Thank you very much. Yeah. Okay. Thank you so much, sir. I would like to hand this stage to Professor P.K. Misra for the next talk in the series of Vikyan Sarvatra Pujyate. Over to you, sir. Professor Misra, sir. Yes. So Please enable your welcome video. our resource person, Professor Alok Suratia, and I request Dr. Harit Kumar Meena, please coordinate the session. पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा के इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में जुड़े समस्त देवियों तथा सज्जनों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे विश्वविद्यालय की परंपरा अनुसार व्याख्यानमाला के प्रारंभ में विश्वविद्यालय का कुल गीत प्रस्तुत होगा और कुल गीत प्रस्तुतिकरण के समय आप सभी से अपने स्थान पर खड़े होने का विनम्र अनुरोध है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के इस ऑनलाइन व्याख्यानमाला में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े समस्त देवियों तथा सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन एवं अभिवादन। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, आज की व्याख्यानमाला के सम्माननीय मुख्य वक्ता जी तथा विश्वविद्यालय के समस्त सम्माननीय शिक्षार्थी, शोधार्थी तथा विद्यार्थीगण का स्वागत करना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सम्मान एवं गौरव का विषय है। आज इस व्याख्यान माला का शीर्षक है भारतीय सांस्कृतिक परंपरा तथा राष्ट्र उत्थान। अयम निज परोविति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम को वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी विचारधारा संकुचित मनोवृत्ति वाले व्यक्तियों की होती है, जबकि इसके विपरीत उदार चरित्र वाले व्यक्तियों के लिए संपूर्ण वसुंधरा को ही परिवार बताया गया है। वार, प्रहार तथा हथियार की अपेक्षा प्यार, व्यवहार तथा परिवार को तवज्जो दी गई है भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में। इस सांस्कृतिक परंपरा में
स्त्री को भी देवी का स्थान बताते हुए उन्हें सम्मान दिया गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसी सोच, ऐसा विचार है भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का। अमिट, अविरल, अद्भुत तथा अकाट्य भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का सम्मान, इसकी पहचान प्रस्तुत की गई है राष्ट्र के युवा वर्ग द्वारा। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर के कोलंबस हॉल में विश्व धर्म सम्मेलन में अपने वक्तव्य से पूर्व स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अमेरिकी भाइयों और बहनों, टू द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहकर उन्होंने भारत को संपूर्ण विश्व के समक्ष अद्भुत रूप से प्रस्तुत किया। इसी प्रकार भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और राष्ट्र उत्थान ये सदैव विश्व पटल पर मुख्यता से मुखरता से युवा वर्ग द्वारा रखे जा रहे हैं। ऐसे ही विचारों के पल्लवन हेतु आज हमारे बीच आज स्पेशल लेक्चर सीरीज के तृतीय उद्बोधन में आदरणीय मुख्य वक्ता जी के रूप में मौजूद हैं सम्माननीय प्रोफेसर आलोक श्रोत्रिय सर। आप इतिहास के विद्यार्थियों के लिए एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। वर्तमान में आप मां नर्मदा की गोद में केंद्रित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व के विभागाध्यक्ष हैं। इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के विभिन्न अकादमिक तथा प्रशासनिक पदों उनके दायित्व का निर्वहन आपके द्वारा किया गया है। आप फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के डीन के पद का नेतृत्व कर चुके हैं तथा वर्तमान में आप डीन एकेडमिक अफेयर्स भी हैं। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पद ओएसडी टू ऑनरेबल वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार तथा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पदों का भी आपने निर्वहन किया है। अपने अध्ययन अध्यापन हेतु आपको इंडो चाइनीज कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत चाइना के प्रतिष्ठित नानजिंग विश्वविद्यालय से पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च का अवसर मिला, जहां आपने बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इन चाइना में बखूबी और प्रशंसनीय कार्य किया है। भारत के विभिन्न पुरातात्विक केंद्रों का उत्खनन आपकी रुचि रुझान का विषय है। इस संदर्भ में राजस्थान के बालाथल तथा मध्य प्रदेश के घोड़ामाड़ा के उत्खनन में आपने अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के गंभीरवा टोला नामक पुरातात्विक केंद्र का उत्खनन भी आप ही के नेतृत्व में किया गया है तथा वर्तमान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महती प्रोजेक्ट एक्सकवेशन ऑफ अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट का आप नेतृत्व कर रहे हैं। आपकी निरंतर पुस्तकें प्रकाशित होती रही हैं, जिनमें प्रधान है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इन चाइना तथा भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयाम। सर, आपके उद्बोधन, आपके वक्तव्य को सुनना पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए सम्मान है। आपके समक्ष नतमस्तक होते हुए, आपको प्रणाम करते हुए मैं आपको आमंत्रित करता हूं आज के उद्बोधन हेतु। सर। धन्यवाद डॉक्टर हरित मीणा जी। और मुझे बहुत जान के प्रसन्नता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में आप अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में आप मेरे सहकर्मी रहे हैं और आपको हम अपने अत्यंत समीप पाते हैं और निश्चित रूप से राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की आभा और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के गौरव को आप लेकर के पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी काम कर रहे हैं, यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। सबसे पहले मैं अभिवादन करना चाहूंगा केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब के माननीय कुलपति प्रोफेसर आरपी तिवारी साहब का, जिन्होंने सागर विश्वविद्यालय को नेतृत्व प्रदान करने के पश्चात पंजाब की भूमि पर केंद्रीय विश्वविद्यालय को एक नवीन दिशा में ले जाने का सफल प्रयत्न जारी रखा हुआ है। जैसी भारत के शिक्षा मंत्रालय की मंशा रही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मंशा रही, उसके अनुरूप शिक्षा, शोध और विस्तार तीनों गतिविधियों में माननीय कुलपति जी संलग्न हैं। अभी भर्ती प्रक्रिया के तहत उन्होंने पंजाब में भर्ती प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है
ऐसे मूर्धन्य शिक्षाविद प्रोफेसर आर.पी. तिवारी जी का मैं अभिवादन करता हूं। इसके साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो अन्य पदाधिकारी हैं, प्रोफेसर संजीव जी, डॉक्टर मीना जी, प्रोफेसर पी.के. मिश्रा जी, फेलिक्स जी और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए समस्त सुधी श्रोतागण, सुधी दर्शकगण, विश्वविद्यालय के सम्माननीय अधिष्ठातागण, अध्यक्षगण, अत्यंत यशस्वी, ऊर्जस्वी, मनस्वी शिक्षकगण और इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थीगण और YouTube के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए समस्त श्रोताओं और दर्शकों का मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय तथा महानर्मदा के तट अमरकंटक से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। जैसा कि डॉक्टर मीना ने अपनी पूर्व पीठिका में स्पष्ट किया कि भारत की संस्कृति मूल्यों को अंगीकार करने में, उनसे सीख लेने में निश्चित रूप से समय समय पर विश्व के मनीषियों ने भारत के ग्रंथों का पठन किया। भारत आकर के उन्होंने ये जानने की चेष्टा की कि वह भारत भूमि किस तरह से ऋषियों की इस परंपरा को आगे बढ़ाती है, इस प्रकार के वैचारिक मूल्यों को प्रसूत करती है और इस प्रकार की अनुशंसाएं करती है जिससे कि संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन कहीं हो सकता है। आधुनिक युग में जिसकी चर्चा डॉक्टर मीना कर रहे थे कि समय समय पर, चाहे वो शोपेनहावर हो जिन्होंने उपनिषदों से शिक्षा प्राप्त की, चाहे वो मैक्स मुलर हो जिन्होंने कहा कि भारत से हम क्या सीखें, वेदों से हम क्या सीखें, या फिर विलियम जोन्स के प्रयास हों जिन्होंने सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट के प्रकाशन का मार्ग प्रशस्त कराया। भारत विद्या, इंडोलॉजी के क्षेत्र में भारत से, भारत के मूल्यों से, भारतीय संस्कृति के अंगों से और भारत के इतिहास से यूरोपीय समुदाय को परिचित करा के भारत की बौद्धिक संपदा को संपूर्ण विश्व के सामने लाने का इन लोगों ने प्रयास भी किया। 1893 की जिस क्रांति का डॉक्टर मीणा उल्लेख कर रहे थे कि जिस प्रकार शिव महिम स्त्रोत का पाठ विवेकानंद जाकर के शिकागो में करते हैं कि अलग अलग नदियां जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार से विभिन्न धर्मों की, विभिन्न मान्यताओं की, विभिन्न संप्रदायों की, विभिन्न प्रकार की वैचारिकी की धाराएं मिलकर के आध्यात्मिकता का निर्माण करती है। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, ब्राह्मण धर्म हो, जैन धर्म हो, इन सभी की धाराएं एक ऐसी आध्यात्मिकता का उद्घोष करती है जिस आध्यात्मिकता में कुछ ऐसे तत्व सन्निहित होते हैं जो सभी धर्मों में समान रूप से प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए जब मनु धर्म की परिभाषा देते हैं तो कहते हैं कि धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्य, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणों। धैर्य, सहनशीलता, क्रोध न करना, अपरिग्रह, सत्य बोलना, आत्म संयम, ये प्रायः सभी धर्मों में मिल जाए।
इन वैश्विक सार्वभौमिक मूल्यों की प्रतिष्ठा सभी धर्मों में प्राप्त होती है। तो संप्रदायों की विविध धाराओं को हम छोड़ दें, ईश्वर प्राप्ति के अलग अलग मार्गों को मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नाः की तरह मुंडक उपनिषद बताता है कि सब कुछ अलग अलग वैचारिकी के कारण निकली हुई बातें हैं, लेकिन उनका उत्स, उनका आधार, उनकी मौलिकता, उनका मूल उन मूल्यों में निहित है जो धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, ईश्वर प्रणिधान जैसे मूल्यों में सन्निहित है। अगर हम इन धाराओं को मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना की तरह, जब ऋग्वेद कहता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यमम मात विश्वानमाहु, वस्तुतः सत्य एक ही है। ऋग्वेद के शुरू में हम देखें तो मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना की जगह हमको दिखाई देती है कि जब वे सबसे पहले उपासना करते हैं इंद्र की, तो इंद्र की प्रशंसा में 250 सूक्त लिख दिए जाते हैं। जब अग्नि की प्रशंसा करते हैं, अग्नि की प्रशंसा में 200 सूक्त लिख दिए जाते हैं। और हर देवता को ऋग्वेदिक साहित्य के अंतर्गत समान रूप से प्रशंसित करते हैं। धन, धान्य, सुख, समृद्धि, ज्ञान, वैभव के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। गायों के लिए प्रार्थना करते हैं, संतति के लिए प्रार्थना करते हैं, अनाज के लिए प्रार्थना करते हैं। और यह समस्त अभिप्सा कालांतर में धर्म के संवर्धन के विशिष्ट स्वरूप में उभरती है, जब वो सवित्र की उपासना करते हुए गायत्री मंत्र का प्रतिपादन करते हैं, विष्णु की उपासना करते हैं, इंद्र की उपासना करते हैं, रुद्र की उपासना करते हैं, वरुण की उपासना करते हैं, अश्विन की उपासना करते हैं। यह परंपरा न केवल भारत में बल्कि ईरान के जेंद अवेस्ता में देखने को मिल जाती है, जिसमें हम कह रहे हैं कि अलग अलग धाराएं केवल एक शक्ति की ओर प्रवृत्त होती हैं। बोगास कोई में जाकर के देखते हैं तो यही वैदिक देवता हमें मिल जाते हैं अभिलेख में। 1400 ईसा पूर्व के बोगास कोई अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य के रूप में। तो इस अर्थ में देखें कि अलग अलग देवताओं की कल्पना भारतीय संस्कृति के मूल ग्रंथ ऋग्वेद में मिलती है। आगे चल करके कवि कहता है, हमारा ऋषि कहता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मात विश्वानमाहु। सत्य एक ही है, लेकिन सभी विद्वान, विप्र, श्रेष्ठगण उसको भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। कुछ उसको अग्नि कहते हैं, कुछ उसे मात विश्वान कहते हैं, कुछ उसे यम कहते हैं, लेकिन वह एक ही है। यही बात विवेकानंद 1893 में शिकागो में कह रहे थे, जिनकी बात को स्वीकार किया संपूर्ण विश्व मानस ने। नृणाम एको शिव महिम स्रोत को लेकर के चलते हैं कि जिस प्रकार सारी नदियां जाकर के मिल जाती है सागर में, उसी प्रकार से उन्होंने सभी धर्मों का मूल, उसको बड़े हाथों हाथ लिया गया। तालियों की लंबी गड़गड़ाहट होती रही। विवेकानंद के बारे में समाचार पत्रों में बड़े बड़े आलेख लिखे गए, फिर बहुत से उनके व्याख्यान होते रहे। तो जिस भारतीय संस्कृति का परिचय अभी पूर्व पीठिका में डॉक्टर मीणा ने दिया, उसी चीज को आगे लेकर के मैं चलने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत की एक संस्कृति जिसके माध्यम से आज हम राष्ट्र उत्थान का, राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का, राष्ट्रीय एकता का, राष्ट्र के सभी नागरिकों में राष्ट्र प्रेम का जज्बा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस संकल्प को ध्वनित किया गया है, पुनरावृत्त किया गया है, व्याख्यायित किया गया है और समस्त उच्च शिक्षण संस्थाओं से, विद्यालयों से तथा शिक्षकों से आह्वान किया गया है
कि भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति के अंगों, भारतीय विरासत के उपादानों को शिक्षा के उन मूल्यों से जोड़ा जाए जिससे आने वाली पीढ़ियां राष्ट्रभक्त होने के साथ छोटी छोटी भिन्नताओं को भूल करके राष्ट्र के एकीकरण में सहायक हो, विश्व पटल पर भारत को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने में सहायक हो, भारतीयों में अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपने विचारों को, अपने बौद्धिक बल को लेकर आत्मगौरव का भाव हो, कोई हीनता की ग्रंथि न हो, गुलामी की मानसिकता न हो, विदेशी भाषाओं का महिमा मंडन न हो, अपनी भाषा में, अपनी शैली में, अपनी संस्कृति में, अपने देश के भीतर मेक इन इंडिया का मूवमेंट हो, वोकल फॉर लोकल की बात हो, लोकल टू ग्लोबल की बात हो, उन सब को शिक्षा में कैसे समाविष्ट करके राष्ट्र का उत्थान किया जाए, इसी थीम को लेकर के, इसी आधार पीठिका को लेकर के आज चर्चा शुरू करते हैं भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और राष्ट्र उत्थान की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति या संस्कृति कहें हम किसी देश की, उस संस्कृति के विभिन्न अंगों, उपादानों, विरासत के तत्वों जिन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने की हम अपेक्षा रखते हैं, तो उसकी चर्चा कर ली जाए। तो संस्कृति का एक जो अर्थ लिया जाता है, परिभाषाएं ली जाती हैं, यह एक अत्यंत व्यापक शब्द है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। इतिहास के अंगों से इसे जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। जब महाभारत लिखता है इतिहास की परिभाषा देते हुए, तो कहता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते। संस्कृति की जब अवधारणा की बात आती है, तो भारतीय मनीषा ने कुछ ऐसे आदर्श जनमानस के सम्मुख रखे जिनसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में उन लक्ष्यों की संसिद्धि हो सके। क्या थे वे लक्ष्य? वे लक्ष्य थे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ, पुरुषार्थ चतुष्टय। इन पुरुषार्थ चतुष्टय के आसपास इन्हें लक्ष्य मानकर जीवन का ताना बाना बुना गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास की संकल्पना की गई और उसका लक्ष्य था धर्म की संसिद्धि, अर्थ और काम की गृहस्थाश्रम में संसिद्धि, वानप्रस्थ से संन्यास तक मोक्ष के लिए प्रयाण। इसीलिए वायु पुराण में भी जब कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष संबंधी परंपराएं, दैनिक आचार विचार, रहन सहन, क्रियाकलाप संस्कृति में सन्निविष्ट होते हैं, तब पता चलता है कि प्राचीन भारतीयों ने उन घटनाओं को, उन संवृत्तियों को, उन अभिप्साओं को, उन मूल्यों को भारतीय आचार व्यवहार में, बौद्धिक परंपरा में, चिंतन में समाविष्ट किया, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की संसिद्धि में सहायक होते थे। तो संस्कृति के अर्थ में भी अगर देखें तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष संबंधी क्रियाकलाप, दैनिक आचार विचार, रहन सहन, क्रियाकलाप सभी को अभिनिविष्ट माना गया संस्कृति के व्यापक अभिधान में। विदेशी विद्वानों की अगर बात करें तो जिसे कल्चर कहते हैं, जिसे हम संस्कृति कहते हैं, उसको किस रूप में कहा गया?
प्रिमिटिव कल्चर नाम की एक किताब लिखी एडवर्ड बी टाइलर ने। 1871 में ये किताब आई, जिसमें कहा गया कि आखिर ये है क्या, कल्चर क्या है। तो एक बड़ी व्यापक परिभाषा उसी तरह से उन्होंने दी। विदेशी विद्वान को अगर देखें इस संदर्भ में, तो वे कहते हैं दैट कॉम्प्लेक्स होल which includes knowledge, belief, art, law, morals, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. मनुष्य के द्वारा जो चीजें अर्जित की गई, जो उसकी आदतें हो सकती है, जो उसकी उपलब्धियां हो सकती है, और उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी क्षमताएं हैं। कौन सी क्षमताएं? जो उसने समाज के एक सदस्य के रूप में अर्जित की है। भारत में हमने जो चर्चा की भारतीय संस्कृति के अर्थ में, वो भी इससे मिलती जुलती ही है। यहाँ इन्होंने जो प्रिमिटिव कल्चर में कल्चर माना, उसमें भी उन्होंने वही बातें की कि जिसमें नॉलेज हो, ज्ञान हो, बिलीफ विश्वास हो, कला, विधि यानी कानून, नैतिक मूल्य, परंपराएं, प्रथाएं और मनुष्य के द्वारा अर्जित की गई अन्य प्रकार की क्षमताएं जो उसने समाज के एक सदस्य के रूप में अर्जित की। इसी अर्थ में हम संस्कृति को लेकर के चलते हैं। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो इस अर्थ को समझ लेना भी आवश्यक होता है कि भारत ने अपने कई वर्षों के सांस्कृतिक जीवन में ऐतिहासिक कालक्रम में, बौद्धिक विमर्श में जिन उपलब्धियों को संचित किया, संग्रह, हम भारतीय संस्कृति के अभिधान मानते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इन्हें स्थानांतरित करें। सत्यकेतु विद्यालंकार जब अपनी पुस्तक में लिखते हैं तो संस्कृति के विषय में लिखते हैं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कर्म के क्षेत्र में जो सृजन मनुष्य करता है उसे संस्कृति कहते हैं। अपनी बुद्धि के माध्यम से कला के अभिधान रचता है, वास्तुकला के अभिधान रचता है, संगीत की कृतियां रचता है, चित्रकला के नए नए सोपान तय करता है। उन सभी के माध्यम से उसकी संस्कृति को हम देखते हैं, अनुभूत करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने की चेष्टा करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने एक अच्छी किताब लिखी, संस्कृति के 4 अध्याय। भारतीय संस्कृति को अगर समझना है, उसके अलग अलग सोपानों को ऐतिहासिक कालक्रम से देखना है, तो बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। दिनकर जी भी लिखते हैं अपनी किताब में कि संस्कृति मानव जीवन में उसी तरह व्याप्त है जैसे फूलों में सुगंध और दूध में मक्खन। वैसे ही यह रची बसी है भारत के जन जन में, जन मन में, जन मानस में। इसका निर्माण कोई एक दिन में नहीं हुआ, युग युगांतर में संस्कृति निर्मित होती है। जिस प्रकार संस्कृति निर्मित होती है उसी प्रकार उसके विलय में भी वर्षों लग जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, फिर भी मगर है बाकी नामो निशा हमारा, है बात कुछ ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोरे जहां हमारा। भारत में सांस्कृतिक परंपरा की जो हम बात कर रहे हैं, वह परंपरा भारत के जनमानस में व्याप्त है और इसीलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये चली आ रही है। ये हमारी थाती है, विरासत है, धरोहर है। इसीलिए हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसे स्थानांतरित करने की। और जब हम राष्ट्र उत्थान की बात करते हैं, राष्ट्र एकीकरण की बात करते हैं, विश्व गुरु के आदर्श को सामने रखने की बात करते हैं, तो हम लक्ष्य करते हैं अपनी संस्कृति के उन मूल्यों का, उन नैतिक आदर्शों का, उन ऊर्ध्वमुखी अपेक्षाओं का जिनकी नागरिकों से अपेक्षा होती है।
हमारे शिक्षण में, हमारी वैचारिकी में आत्मगौरव का भाव आए इस विरासतों के माध्यम से, पर्यटन के विकास से अपने देश को युवा पीढ़ी समझ सके, अपने कैरियर के लिए भी किस तरह से इनके माध्यम से रोजगार का सृजन हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उसकी भी दिशा दी है कि भारत भ्रमण होना चाहिए, जिससे कि हमारा विद्यार्थी देश को समझे, देश की संस्कृति को समझे। आगे मैं बात करूंगा कि किस तरह से राष्ट्र उत्थान में हम ले सकते हैं। मीना जी ने जो बात अभी थोड़ी देर पहले कही, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, तो वो क्या है और कब ये वसुधा एक कुटुंब हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श कब फलीभूत हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। भारत की क्या भूमिका हो सकती है, यह सांस्कृतिक परंपरा कहीं इसके लिए सह अस्तित्व को सिद्ध करने में उपयोगी है भी अथवा नहीं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये एक अत्यंत सामयिक बात है, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध जैसे हालात भी पैदा होने की स्थिति आ जाती है कभी कभी। तो क्या भारत कर सकता है अपने देश के भीतर और विश्व के समक्ष, उसे आज एक चुनौती के रूप में देखने की आवश्यकता है। तो आत्म विकास की बात हो, चेतना के विस्तार की बात हो, मूल्यों की प्रतिष्ठापना की बात हो, तो हम भारतीय संस्कृति के विभिन्न उपादानों को, विभिन्न अंगों को, विभिन्न उपांगों को और विभिन्न तत्वों को समग्रता में देखने की चेष्टा करते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की बात जब बहुत कम लोग करते हैं, तो जितने प्रकार के धार्मिक विद्वेष हैं, सांप्रदायिक तनाव हैं, जितने प्रकार के मत मतांतर हैं, उनको शांत करने में निश्चित रूप से, चाहे वो शैवों का, वैष्णवों का मामला रहा हो, चाहे उत्तर और दक्षिण का मामला रहा हो, चाहे विभिन्न संप्रदायों की बात रही हो, बौद्ध और जैन की बात रही हो, ब्राह्मण और बौद्ध का संघर्ष रहा हो, तब एकम सद विप्रा बहुधा वदंती का जो स्वर है वह दिशा देता है। और ये शासकों के लिए भी कोई नई बात नहीं है। भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं कि भारत विविधताओं का देश, कई भाषाएं हैं, कोस कोस पे वाणी बदल जाती है, वाणी बदल जाती है, पानी बदल जाता है, संस्कृति बदल जाती है, आचार विचार बदल जाते हैं, रहन सहन बदल जाते हैं। ऐसे देश को एकजुट रखना निश्चित रूप से एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की आवश्यकता हो जाती है। और ये सम्राटों के सम्मुख, राजाओं के सम्मुख, शासकों के सम्मुख भी एक बड़ी चुनौती रही। आज ही नहीं, सम्राट अशोक का 12वां अभिलेख उठा करके हम देखें तो सम्राट अशोक लिखते हैं कि देश में सार की वृद्धि कब होती है। सार बढ़ी, प्राकृत भाषा में लिखा, उन्होंने लिखवाया अपने अभिलेख में कि सार बढ़ी कब होती है, सार की वृद्धि कब होती है। सार की वृद्धि तब होती है जब हम वचोभूति रखते हैं, वाणी का संयम रखते हैं, अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा नहीं करते, सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं, तब सार की वृद्धि होती है। सभी में जब सह अस्तित्व का भाव होता है, तब सार की वृद्धि होती है। तो ये शासनाध्यक्षों के समक्ष, राजाओं के समक्ष, सम्राटों के समक्ष सदैव से चुनौती रही इस विविधता के देश में। मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार था, हिंदू कुश से लेकर सुदूर ताम्रपन्नी तक, श्रीलंका तक, श्रीलंका चोड़ा, पाड़ा, सतीयपुत्र, केतलपुत्र तक उसकी सीमाएं जाती थी। आतंबपन्नी की बात वो करता है। चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार हम देखते हैं तो इधर महास्थान से लेकर के सौराष्ट्र में जूनागढ़ तक हम उसके अभिलेख पाते हैं। तो इतने विस्तृत साम्राज्य की विविधता को मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत लेकर के आना, अपने सीधे प्रशासन में रखना, महामात्रों की नियुक्ति करना, राजुक की नियुक्ति करना, प्रादेशिक की नियुक्ति करना, गुप्तचरों की नियुक्ति करना और संपूर्ण देश के प्रशासन को चलाते हुए बौद्धों को भी संतुष्ट रखना,
आजीविकों को भी गुफाएं दान करना और अन्य मतावलंबियों को भी साथ में लेकर चलना एक सफल शासन की निशानी उस समय हो सकती थी, तो निश्चित रूप से आज भी यह संभव है उन मूल्यों के द्वारा। आगे चल करके जब हम देखते हैं, वायु पुराण की बात करते हैं, विष्णु पुराण की बात करते हैं, तो एक सांस्कृतिक एकता तो हमको दिखाई देती है। चाहे अनेक धर्म हो, चाहे अनेक संप्रदाय हो, चाहे वैचारिकी भिन्न भिन्न हो, चाहे भाषाएं भिन्न भिन्न हो, चाहे रहन सहन खान पान बदल जाता हो, तब भी एक संस्कृति की धारा उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भारत में प्रवाहित होती है। इसीलिए लिखता है वायु पुराण में, विष्णु पुराण में भी बाद में उसको भिन्न प्रकार से आता है, कमोबेश इसी तरह से है वो कि उत्तरम यद समुद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती तत्र संतति की जब हम बात करते हैं, तो ये संपूर्ण सांस्कृतिक धरा समुद्र के उत्तर वाला क्षेत्र, हिमालय के दक्षिण का क्षेत्र, वहां के निवासी हम सभी भारतीय हैं, और वह भारत भूमि सांस्कृतिक अंगों में सभी को एकजुट रखती है, एकीकृत रखती है। सभी के मध्य एक धागा है जो संस्कृति का धागा है। यह कहां कमजोर पड़ जाता है? क्यों आपसी विद्वेष धर्म को लेकर, जाति को लेकर, भाषा को लेकर, क्षेत्र को लेकर, नदियों के जल के बंटवारे को लेकर हो जाते हैं? इसकी भी चर्चा इतिहास की चुनौतियों में हम किया करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति के जो तत्व रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इनको जोड़ के रखा। शासनाध्यक्षों ने जो चक्रवर्ती सम्राट का आदर्श रखा, वह इसी रूप में था कि कैसे भारत को एकजुट रखा जाए। अंग्रेज जिस सीमा को प्राप्त कभी नहीं कर पाए, उस सीमा को चंद्र बात आती है कि उसने संपूर्ण भारत को एकजुट रखने की कोशिश की, शक्ति के बल पे, भुजबल पराक्रम के बल पे, और वही संस्कृति की धारा सभी में बहती भी थी। जब हम बात करते हैं उसके उत्तर भारत के अभियान की, तो हम देखते हैं रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग प्रभृति सर्व आर्यावर्त के जितने राजा थे, दंडेव दैतेव कोत कुलजम पुष्पावेह विड़ता की बात करते हैं। क्षणाद अनमूल्य उन्मूल्याच्युत नागसेन गणपति नाग दंडेव ग्राहतेव कोत कुलजम पुष्पावेह विड़ता। रुद्रदेव को, मतिल को, नागदत्त को, चंद्रवर्मा को पराजित करता है और उसके पश्चात कोतकुल को दंड देता है, पुष्पपुर में अपना उत्सव मनाता है। दक्षिणापथ के राजाओं को भी अधिगत करता है और कैसे भारत को एकजुट करता है, उसकी भी चर्चा उसने प्रयाग प्रशस्ति में की है कि कौशलक महेंद्रक, महाकांतारक व्याघ्रराज, कोरालक मंटराज, पेष्टपुरक महेंद्रगिरी, कोट्टुरक स्वामीदत्त, एवंड पल्लक दमन, कांचेयक विष्णुगोप, अवमुक्तक नीलराज, वेंगेयक हस्तिवर्मन, कोस्थलपुरक धनंजय प्रभृति सर्व दक्षिणापथ राजग्रहण मोक्षानुग्रह जनित प्रतापोन विश्व महाभागस। समस्त दक्षिण भारत के राजाओं को अपने अधिकार में लेता है और उनसे कर लेकर के उन्हें मुक्त कर देता है, संपूर्ण भारत में अपना प्रभाव स्थापित करता है। फिर उत्तर भारत के राजाओं को अधिगत करता है, 10 राजाओं को, सीमावर्ती राजाओं पे अपना प्रभाव स्थापित करता है। देवपुत्र शाही शाहानुशाही शक मुरुंडेह सेंगल का अधिभिष्ट, सेंगल द्वीप तक, अंडमान निकोबार तक, वहां से लेके उत्तर पंजाब वाला देवपुत्र शाही शाहानुशाही, पश्चिमी पंजाब जो हमारा है वहां तक उसका प्रभाव चला जाता है। किदार कुषाण जो रहा करते थे, आज के पूर्वी पंजाब से पश्चिम की तरफ भी हम देखें तो देवपुत्र शाही शाहानुशाही उपाधि वो लोग धारण किया करते थे। देवपुत्र शाही शाहानुशाही शक मुरुंडेह सेंगल का अधिभिष्य सर्वद्वीपवासी भी आत्मनिवेदन कन्योपायन दान गरुत मदन कस्व विषय भुक्ति शासन याचनाद्युपाय सेवा कृत बाहु वीर्यम प्रसर धरणी बंधस्य पृथ्व्याम प्रतिवत। संपूर्ण पृथ्वी तल, जो उत्तर में पंजाब के क्षेत्र से, दक्षिण में सिंघल
आदि और द्वीप जो अंडमान निकोबार हो सकते हैं, लक्षद्वीप है, वहां तक अपने प्रभाव को स्थापित किया। पूर्व और पश्चिम की दिशाओं के जो राजा थे, मध्यवर्ती जो राजा थे, परिचारकीकृत सर्वाट्विक राजस्य, समतट डवाक कामरूप नेपाल कर त्रिपुरादि प्रत्यंत नप्तिभीह मालव अर्जुनायन योधे माद्रक आधीर प्रार्जुन सनकानिक काक खर परिकादिभिश्च सर्व कर दान आज्ञा करण प्रणाम आगमन। वो सभी उसके दरबार में आकर आज्ञा प्राप्त करते थे, प्रणाम करते थे। आत्मनिवेदन कन्योपायन दान गरुत मदन कृष्ण विषय मुक्ति शासन याचनाद्युपाय सेवा कृत बाहु वीर्यम प्रसरणी बंधस्य पृथ्व्याम प्रतिरतस। स्वयं निवेदन करके उसके दरबार में प्रस्तुत होते थे, अपनी कन्याओं का उससे विवाह करते थे और गरुड़ की मुद्रा से जारी अपने सिक्के और आदेश अपने क्षेत्र में चलवाते थे। ये बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि इस भारत भूमि को जब अंग्रेज कहा कर एकजुट बांधा है, इसके पहले ये बटा हुआ था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। प्राचीन काल में भी चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने इतना विशाल साम्राज्य स्थापित किया जिसके लिए अंग्रेज भी तरसते थे। अकबर भी कभी उतना बड़ा साम्राज्य बना नहीं पाया। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था, लेकिन उसने भी इतना बड़ा साम्राज्य नहीं बनाया। न ही औरंगजेब उस सीमा को प्राप्त कर सका। और अंग्रेज जो कहते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कभी सूरज नहीं ढलता, भारत के उतने विशाल साम्राज्य को नहीं बना पाए जितना चंद्रगुप्त के पास था। इसलिए इन बातों में कोई बल नहीं कि उन्होंने, भारत में कोई ऐसी राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं थी। भारत एक राष्ट्र था जिसकी सीमाएं वायु पुराण, विष्णु पुराण साबित करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा के तहत राजा प्रयास करते थे कि एक शासनादेश के तहत ये सभी आए। और अंतर्निहित संस्कृति की धाराएं क्या थी जो इसे एकजुट रखती थी, आज भी रख सकती हैं और राष्ट्र उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। तो इसके जो मुख्य तत्व हैं जिनको हम सदैव से पढ़ते आए हैं कि इसमें सहिष्णुता है, समन्वयशीलता है, सहनशीलता है, लचीलापन, राष्ट्र को सर्वोपरि मानना, पृथ्वी को माता मान, उसके हम पुत्र हैं ये मान, वचोगूति वाणी का संयम, आत्म संयम, परोपकार, कुछ ऐसे मूल्य हैं। इतने 18 पुराण हैं। क्या कहा जाता है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। 18 पुराणों में व्यास की दो ही बातें हैं, परोपकार च पुण्याय पापाय परपीड़नम। जब हम दूसरों के बारे में विचार करते हैं, परोपकार का भाव मन में रखते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाने का भाव नहीं रखते, तो सबसे बड़ा पुण्य होता है। ये भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख अंग है। अगर हम कहीं विद्वेष देखते हैं तो स्वार्थ के कारण देखते हैं। अगर कहीं क्षुद्र स्वार्थों का टकराव देखते हैं तो वो भारतीय संस्कृति के मूल्यों से डिग जाने के कारण, च्युत हो जाने के कारण। भारतीय संस्कृति हमेशा सिखाती रही है कि परोपकार च पुण्याय पापाय परपीड़न। बाद में तुलसीदास भी इसी बात को कह रहे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई अधम कार्य नहीं है। ये कहाँ सिद्ध होता है? राष्ट्र उत्थान में कैसे साबित होता है, वसुधैव कुटुंबकम में कैसे साबित होता है, और राष्ट्रीयता की भावना में कैसे साबित होता है। इन तीनों चीजों को आगे चल करके मैं स्पष्ट करता हूं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं भारतीय संस्कृति के इन तत्वों की विशेषता, जिसमें हमने सभी सहिष्णुता देख ली, समन्वयशीलता देख ली, शक आए, हुन आए, मंगोल आए, कुषाण आए, तुर्क आए, सभी आकर के समाविष्ट हो गए इस संस्कृति में। तो सहिष्णुता है, समन्वयशीलता है, सहनशीलता है, लचीलापन है, राष्ट्रभक्ति का भाव भी है, आत्म संयम की भाव है, दम, त्याग और अप्रमाद, ये 3 अमृत पद हैं, ये गीता कहती है। और इस बात को, दम, त्याग और अप्रमाद, ये अमृत पद है, इसको स्वीकार करता है यूनान से आने वाला
यूनानी यात्री हेलियोडोरस, और जब बेस नगर में वो फर्स्ट सेंचुरी बीसी के समय, सेकंड सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी बीसी के बीच के समय में अपना जब अभिलेख लिखवाता है, कारितो अयम भागवतेन हेलियोडोरेन की जब वो बात करता है, तो वो यही बात करता है कि दम, त्याग और अपमाद, गीता के भाव को, गीता के इस भाव को वो लिखता है अपने पिलर के ऊपर, स्तंभ के ऊपर। तो आप देखेंगे कि आत्म संयम की जो बात थी, दम, त्याग और अप्रमाद, जो गीता कह रही है वो हेलियोडोरस भी स्वीकार करता है विश्व फलक भारत आकर के। तो आत्म संयम, परोपकार, इसकी बात हुई। ग्रहणशीलता है भारतीय संस्कृति में, आध्यात्मिकता, भौतिकता, लौकिकता का उसमें निषेध नहीं है, नहीं तो चक्रवर्ती की सम्राट की अवधारणा हो ही नहीं सकती थी। लौकिकता है, क्षण भंगुरता है, लेकिन तब भी सौंदर्य के प्रति ललक है। इसीलिए हम जब बनाते हैं रंगोली, उत्सव मनाते हैं, तो यद्यपि क्षण भंगुर है, लेकिन एक सौंदर्य बोध भी है, उसमें सरसता भी है। इसीलिए कहते हैं कि धर्म आखिर है क्या? यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिसमें हमारा आत्मिक विकास भी होता है, लौकिक विकास भी होता है, पारलौकिक विकास भी होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों जिसमें शामिल होते हैं, वही हमारी संस्कृति के अंग में और संस्कृति के तत्वों में शामिल हो जाता है। तो सांस्कृतिक उपादानों को सबसे पहले हमने समझने की चेष्टा की, और ये सांस्कृतिक उपादान राष्ट्रोत्थान में कैसे हो सकते हैं, इसकी चर्चा आगे करते हैं। सबसे पहले तो जीवन पद्धति की हमने बात की, कार्य विभाजन के आधार पे हमने चतुर वर्णों की कल्पना की, और ये 4 वर्ण अपना काम चुन भी सकते थे, बाद में रूढ़ हो गया। लेकिन शुरू में आप देखें तोकारु अहम ततो भीषक उपल प्रक्षिणी ममा, ऋग्वेद कहता है कारु अहम ततो भीषक उपल प्रक्षिणी ममा, मैं कारु हूं, मंत्र निर्माता हूं, मेरे पिता भीषक हैं, मेरी माता उपल प्रक्षिणी है, तब भी अलग अलग काम करते हुए हम लोग एक ही परिवार में रहते हैं। पुरुषार्थों की अवधारणा हो, 3 ऋणों से मुक्त होना हो, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण से मुक्त होना हो, 5 महायज्ञ हो, परिवार, शिक्षा, आयुर्वेद, परंपरागत औषधियां, ये सभी जीवन पद्धति के अंग बनाए, और यही भारत की संस्कृति के उपादान है, यही भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं। धर्म की जो बात है, मैंने बताया आपको, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीह, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये सभी धर्मों में समाविष्ट किए गए। चाहे वो प्राग ऐतिहासिक काल से हम देख लें, हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव, इस्लाम, भक्ति परंपरा और विश्वास और क्रियाओं की जन जन को जोड़ने वाले जो तत्व हैं, उन्हीं ने संपूर्ण रूप से एक भारतीय संस्कृति के विभिन्न तत्वों का समावेश किया। साहित्य की परंपरा में देखेंगे हम, वही विरासत हमें दिखाई देगी, चाहे वो वाल्मीकि हो, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति, महाकाव्य, पुराण से लेकर के बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, भवभूति और टैगोर तक की परंपरा देखें, आज तक के कवियों की परंपरा देखें। विज्ञान में चरक की, सुश्रुत, वाघभट्ट, आर्यभट्ट, बराहमिहिर, जेसी बोस, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम तक की परंपरा देख लें। तो ये सभी भारत की परंपरा के, संस्कृति के मूल तत्वों को लेकर के चलने वाले हैं। समय की सीमा है, तो अंत में जो बातें मैं कहूंगा कि कैसे ये राष्ट्र उत्थान में सहायक हो सकती है और हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए। संस्कृति की विशेषताएं हमने देखी, इसके अंग और उपांग हमने देखे, इसमें कौन कौन सी विरासत है, प्रोडक्ट एंड विटनेस ऑफ द डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड ऑफ द स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स ऑफ द पास्ट। अतीत के जो उपादान हैं, अलग अलग परंपराएं हैं और आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं, उन सभी का सार हम हेरिटेज मानते हैं। ये कोई दूसरा नहीं कहता, यूनेस्को बताती है
कि द प्रोडक्ट एंड विटनेस ऑफ द डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड ऑफ द स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स ऑफ द पास्ट। डेविडसन ने दिया, जिसको यूनेस्को ने शामिल किया है। हेरिटेज इज व्हाट वी वैल्यू फ्रॉम द पास्ट। कल्चरल हेरिटेज इज कल्चरल एस्पेक्ट्स, साइट्स, मॉन्यूमेंट्स, फोकलोर, ट्रेडिशंस, एक्टिविटीज, प्रैक्टिसेस। इसलिए इसको हम फोटो कहाँ लगाओगे? ध्यान में रखते हैं। तो अंगों को समझ गए, उपांगों को समझ गए, विरासत के विभिन्न उपादानों को समझा, मूल्यों की अभिप्सा को समझा, धर्म की अवधारणा को समझा। अब बात करते हैं एकीकरण। राष्ट्र के एकीकरण को लेकर के चक्रवर्ती की सम्राट की अवधारणा के तहत राजनीतिक ऐक्य तो बहुत आवश्यक है, साथ ही आवश्यक है उन तत्वों को हवा न देना जो विभेद का काम करे। चाहे संप्रदाय भिन्न भिन्न हो, भाषाएं भिन्न भिन्न हो, कब कराना चाहते हो अच्छी बात? जातियां भिन्न भिन्न हो, वर्ग भिन्न भिन्न हो, परंपराएं, मान्यताएं, रहन सहन, जीवन पद्धति भिन्न भिन्न हो, तब भी हिमालय के दक्षिण और समुद्र के उत्तर में पूरब से लेकर पश्चिम तक के समस्त भारतवासी एकजुट रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करना सांस्कृतिक नवजागरण और राष्ट्रोत्थान का प्रमुख तत्व है। यह साबित होगा कैसे? जैसे सबसे पहले बात आती है एक राष्ट्रीयता की। एक राष्ट्र के रूप में अगर राष्ट्र पर कोई संकट आता है, अगर किसी विदेशी शक्ति का हमला होता है, अगर कोई विजातीय तत्व भारत में प्रवेश की चेष्टा करते हैं, भारतीय संस्कृति के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की चेष्टा करते हैं, तब उसका प्रतिकार करना, उसके विरुद्ध आवाज उठाना, सभी भारतीयों का एकजुट होना, उस स्तर पर आकर के हथियार उठाना, अपनी सेनाओं को सशक्त करना तब आवश्यक होता है, संघर्ष तब आवश्यक होता है जब किसी विदेशी शक्ति से हमें बचना होता है, सामना करना होता है, ऑफेंस करना होता है या डिफेंस करना होता है। लेकिन देश के अंदर बहुत से तत्व हैं जिनकी मैंने अभी चर्चा की, जिनके कारण विविधता में हम एकता की बात करते हैं, संस्कृति के विभिन्न फूलों की हम बात करते हैं। तब उस एकीकरण के लिए क्या आवश्यक है? वचोगुति, आत्मसंयम, परोपकार, सेल्फलेसनेस एंड ईगोलेसनेस। कोई बात नहीं, बढ़िया। देश के अंदर तो सद्भाव तभी रहेगा जब विविधताओं की खाई को पाटने का हम यत्न करें। राजनीतिक कारकों से बहुत ज्यादा आई क्या? देश के अंदर विभेद की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आत्मसंयम और परोपकार, ये दो प्रमुख तत्व हैं भारतीय संस्कृति के, जिसके कारण देश को सांस्कृतिक ताने बाने में हम एक बना के रख सकते हैं। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम की जो बात अभी डॉक्टर मीणा ने कही थी, वह आंतरिक स्वरूप के लिए बहुत आवश्यक है। हम श्रेष्ठ हैं, उत्तर भारत श्रेष्ठ है, दक्षिण भारत श्रेष्ठ है, पूर्व श्रेष्ठ है, पश्चिम श्रेष्ठ है, ये जाति श्रेष्ठ है, ये धर्म श्रेष्ठ है, ये बातें देश के अंदर आवश्यक नहीं। देश के अंदर हमको एकजुट रहने की आवश्यकता है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम पहले देश के स्तर पे हमको करने की आवश्यकता है। सेल्फलेसनेस से, ईगोलेसनेस से ये चीज संभव होती है। और राष्ट्र उत्थान कब होता है? जब हम दूसरे के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ट्रैफिक कब व्यवस्थित होता है? जब हम सड़कों पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करते, दूसरे की मनोस्थिति को देखने की कोशिश करते हैं। तो देश के अंदर ये चीजें बहुत आवश्यक है। आक्रोश, प्रतिशोध, हमला, ये चीजें तब आवश्यक होती है जब केवल किसी बाहरी शक्ति का आक्रमण हमारे देश पे हो रहा हो। हम सभी भारतवासियों को एक दूसरे के प्रति इन नकारात्मक भावनाओं को नहीं लाना चाहिए, तभी देश मजबूत बनता है। तो दो चीजें होती है, राष्ट्र पर जब संकट आता है तब राष्ट्र के लिए हमारी सेनाएं मजबूत होनी चाहिए, आक्रोश का भाव, प्रतिशोध का भाव, पराक्रम का भाव, हमले का भाव उस अर्थ में होना चाहिए जब राष्ट्र को आवश्यकता है।
लेकिन देश के अंदर इन नकारात्मक भावों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, तभी राष्ट्रोन्नति साबित हो सकती है। संस्कृति के ये सभी तत्व हमको जो सिखाते हैं, दूसरे का ख्याल रखना सिखाते हैं। परोपकार च पुण्याय पापाय पर पीड़नम की जो बात हो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई की बात हो, वचो गुति की बात हो, तो इन सब सो देश की जब उन्नति की बात हम कर रहे हैं तो दोनों चीजें ध्यान में रखने की। एक तत्व आता है राष्ट्रीय एकता का और एक तत्व आता है वसुधैव कुटुंबकम का। तो सबसे पहले भारत भारती का, जब आप एकजुट रहते हैं, क्षुद्र स्वार्थों से मुक्त होते हैं, निस्वार्थ और निष्क्रिय भाव से परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, सेल्फलेसनेस और ईगोलेसनेस के साथ काम करते हैं, आत्म संयम रख के परोपकार की भावना से काम करते हैं, तभी इन विभिन्न प्रकार के विभेदों को हम पाट सकते हैं और देश के अंदर वसुधा एव कुटुंबकम का भाव रख सकते हैं। लेकिन देश को अगर कोई बुरी नजर से देखता है, तब सब एकजुट होकर अपनी राष्ट्र की सैन्य शक्ति को, राष्ट्र की पराक्रम शक्ति को, राष्ट्र के गौरव को अक्षुण्ण रखने के लिए एकजुट रह करके प्रतिकार कर सकते हैं। लेकिन देश के नागरिकों के बीच जाति को लेकर, धर्म को लेकर, विद्वेष को लेकर, संप्रदाय को लेकर, भाषा को लेकर, क्षेत्र को लेकर, वर्ग को लेकर के कोई विद्वेष नहीं होना चाहिए। यही भारत की नई शिक्षा नीति का भी उद्देश्य है। चरय वेति का भी उद्घोष है। कर्णवंतो विश्व मार्यम की भावना भी है। आनो भद्रा कृत्वो यंतो विश्व तह की बात भी है। तो सबसे पहले संपूर्ण मानवता जब सह अस्तित्व की भावना रखने लगे, परोपकार का भाव रखने लगे, पारस्परिक सद्भाव का भाव रखने लगे, तो संपूर्ण विश्व के लिए भी वसुधा एवं कुटुंबकम हो सकती है। लेकिन निजी स्वार्थ, राष्ट्रों की निजी महत्वाकांक्षाएं, उसके कारण राष्ट्रों के बीच भी युद्ध होते हैं, लेकिन एक राष्ट्र के नागरिकों के बीच संघर्ष नहीं होना चाहिए। तो भारतीय संस्कृति के वो तत्व जो देश के नागरिक को दूसरे नागरिक से जोड़ते हैं, उनको बढ़ावा देने की हमको आवश्यकता है कि सभी मिलजुल के संश्लिष्ट समाज के रूप में रहें। और यह संश्लिष्ट समाज किसी भी विदेशी शक्ति को मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता, सामर्थ्य रखता है। तो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा हम सभी को एकजुट रखती है, और यही जब आंतरिक रूप से हम मजबूत होते हैं तो हमारा देश उन्नति की ओर उन्मुख भी होता है और समस्त राष्ट्रों के सम्मुख सिर तान के खड़ा भी रह सकता है। इसीलिए कहा जाता था कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल। चीन से यदि बुरी स्थिति भी हुई, 62 की बात भी हम करें, तो उसके बाद से सैन्य शक्ति के विस्तार की बात हुई। तो दोनों चीजें हैं, एक राष्ट्रीय एकीकरण की बात है, राष्ट्र उत्थान की बात है, आंतरिक एकीकरण की बात है, आंतरिक सद्भाव की बात है, पारस्परिक सह अस्तित्व की बात है, और आत्म सम्मान, आत्म गौरव, आत्म संयम और परोपकार की बात है। वहां देश को आंतरिक रूप से एकजुट रहने की आवश्यकता है। निजी स्वार्थों को, क्षुद्र स्वार्थों को, निजी भिन्नताओं को, विभिन्न प्रकार के विभेदों को भूल करके जब हम राष्ट्र के रूप में एक होते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से संयुक्त होते हैं, तो देश मजबूत होता है, राष्ट्र उन्नति की ओर उन्मुख होता है। तभी हम वोकल फॉर लोकल होते हैं, लोकल से ग्लोबल होते हैं, और संपूर्ण राष्ट्र देश की शक्ति का लोहा मानता है। बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षेप में मुझे यही बातें कहनी थी जो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से राष्ट्र उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों से सर जो आपने उदाहरण दिए, उससे हम सभी बौद्धिक रूप से अर्जित हुए, मानसिक रूप से सर्जित हुए। वस्तुतः आपको सुनना इतिहास को जीने जैसा होता है, इतिहास का आलिंगन करना जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु माननीय कुलपति जी से करबद्ध निवेदन है।
माननीय कुलपति जी, Go ahead, sir. अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु माननीय कुलपति जी से करबद्ध निवेदन है। लेकिन स्क्रीन माननीय कुलपति जी से अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु करबद्ध निवेदन है। बताइए क्या करें? बस 1 मिनट वेट कर रहे हैं। कोई आया होगा सर, माननीय कुलपति जी संभवतः किसी अति व्यस्त कार्यक्रम में अभी व्यस्त हुए हैं। इस संदर्भ में आपसे निवेदन है कि हम 1 मिनट इंतजार करें। ठीक है मीना जी, ठीक है। जी आज सर। क्या है, सागर यूनिवर्सिटी में भी एक लेक्चर मेरा लगा है तो वो लोग भी वेट ही कर रहे हैं बस। जी चलो जी जी सर। माननीय कुलपति जी को सुनने के बाद ही जुड़ूंगा उधर। सर निवेदन भी पूर्ण कर रहे हैं। हो सकता है कोई आया होगा। चले आगे चले। चलना पड़ेगा, कोई लाइन चल रहा है। सर, माननीय कुलपति जी पिछले उद्बोधन में हम लोगों के साथ ही थे। संभवतः अभी किसी आकस्मिक व्यस्तता की वजह से वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। वो अपनी आईडी से सर हमारे बीच है, लेकिन संभवतः किसी और से रूबरू है। Dr. Felix. Dr. Felix. She has joined, but he is probably busy. So we continue our vote of thanks. Okay. सर, माननीय कुलपति जी किसी आकस्मिक कार्य में व्यस्त हुए, ऐसा संदेश, ऐसा संकेत अभी माननीय कुलपति जी के सचिवालय से आया है। ऐसे नहीं आया है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। सर आज के कार्यक्रम के स्वप्न दृष्टा माननीय कुलपति जी, वस्तुतः उन्हीं के मार्गदर्शन में स्थापना दिवस की व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है। हम सभी उनका आभार प्रस्तुत करते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय सर आप जुड़े, व्यस्ततम समय में भी आपने समय निकाला। सर, आपकी व्यस्तता को बहुत नजदीकी से मैंने देखा है, मैं साक्षी हूँ। फिर भी सर 1 घंटे का आपने समय निकाला, 60 मिनट आपने दिए, इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार आपका ऋणी है। प्रोफेसर फेलिक्स, प्रोफेसर पीके मिश्रा जी, प्रोफेसर बली बहादुर जी तथा तकनीकी रूप से इस कार्यक्रम को सफल, सुचारू, कुशल बनाने के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जिनका भी योगदान है, विश्वविद्यालय परिवार उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता है। आप सभी का धन्यवाद। राष्ट्र के मान सम्मान हेतु राष्ट्रगान के लिए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हुए।
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य